Hello, people. So, what's a new topic? Something related to planes. Yeah, it's Tejas Mk1A. To know more about this, let's move forward. But before that, don't forget to subscribe to the channel of News Canvas. So, what is Tejas Mk1A? तेजस MK1A एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है बाय द फोर्थ जनरेशन फाइटर विथ क्रिटिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो कि इंक्लूड करती है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और केपेबल है ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी। ये एक इंडिया का पहला सेल्फ मेड फाइटर जेट है एंड इट रिसीव्ड द फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस फॉर इंडक्शन इनटू द एयर फोर्स एज अ फुल्ली वेपनाइज्ड फाइटर जेट इन February 2019. The final operational clearance, or as we say FOC aircraft of Tejas, has several additional capabilities. अब additional capabilities किससे compare करें तो it is as compared to the initial operational clearance or IOC aircraft. The primary one being a more advanced missile capability with a significantly enhanced range. जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट ये तेजस है वो मैन्युफैक्चर किया गया है एट द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दैट इज HAL और डिजाइन किया गया है बाय द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज ADA फॉर द इंडियन एयर फोर्स एंड द इंडियन नेवी। तेजस एक फुल्ली वेपनाइज्ड लाइट फाइटर प्लेन है विद अ सिंगल इंजन। Or not only this, there are more to it. Although a lightweight aircraft with a short range, Tejas aircraft can carry the same array of modern weapons that bigger warplanes carry. From precision guided and standoff weaponry to long range, beyond visual range missiles that can take down enemy planes from a safe distance. तेजस के पास बहुत सारे एडवांस्ड फीचर भी है जैसे कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग और एयर टू ग्राउंड वेपन्स। जो मिलिट्री एविएशन रेगुलेटर है उसने इसको एक इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस या तो फिर IOC दे दिया है टू LCA तेजस इन 2013 and inducted it into Indian Air Force 45 Squadron in July 2016 to prepare for combat readiness. Last year, May, the Air Force operationalized its second squadron of homemade Tejas fighter jets, assigned them to its number 18 squadron, the Flying Bullets, based at Sulur near Coimbatore in Tamil Nadu. The squadron was equipped with 4th generation Mk1 Tejas LCA aircraft. The naval variant of the Tejas in development stage successfully performed arrested landings on the aircraft carrier INS Vikram Aditya. So this was all about Tejas and its capabilities. But let's know why is it in current news. So why is Tejas in news currently? तो जो डिलीवरी है तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की वो इंडियन एयरफोर्स को हुई अंडर अ ₹48,000 करोड़ डील जो कि स्टार्ट होगी मार्च 2024 से और करीब 16 एयरक्राफ्ट रोल होंगे एनुअली टिल द कंप्लीशन ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ 83 जेट्स। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आर माधवन ने बताया हमें एक इंटरव्यू में जो कि पीटीआई के साथ किया गया था। मिस्टर माधवन ऑल्सो सेड दैट अ नंबर ऑफ कंट्रीज हैव शोन कीन इंटरेस्ट इन प्रोक्योरमेंट ऑफ द तेजस एयरक्राफ्ट और जो फर्स्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो ऐसा लग रहा है कि कपल ऑफ इयर्स में आ जाएगा। मिस्टर माधवन ने ये भी बोला कि तेजस मार्क 1A जेट का सुपीरियर परफॉर्मेंस लेवल है अगर हम कंपेयर करें उसको चाइना के JF-17 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट से, क्योंकि इसका बेटर इंजन है, बेटर रेडार सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी बेटर है बिसाइड एन एज इन द ओवरऑल टेक्नोलॉजी। जो बिगेस्ट डिफरेंस है ऑफ कोर्स वो है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का जो कि नॉन एग्जिस्टेंट है कॉम्पिटिटर के प्लेन में। Cabinet Committee on Security (CCS), which is chaired by Prime Minister Narendra Modi on January 13,
approved the rupee 48,000 crore deal to procure 73 Tejas Mk1A variant and 10 LCA Tejas Mk1 trainer aircraft from the HAL to boost the Indian Air Force combat prowess. So इसके बाद इतने सारे ये एयरक्राफ्ट आने के बाद इंडिया की जो डिफेंस पावर है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी और इंडिया की सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी. So this was all about Tejas. If you liked my video and found it was informative, so please like the video. Your feedbacks are valuable to us. Please do give one in the comment box. Do follow the pages of News Canvas on Instagram and Facebook. And don't forget to install the app of News Canvas. Till then, bye bye.